हेलो जी दोस्तों, सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਅਕਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਹੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ बड़ी खुशी के नाल मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे कि आप बैडमिंटन से जुड़ी हैं हमारे साथ और आपके हमारे बहुत ही प्यारी शख्सियत भाई साहब, भाई इंद्रनील चौधरी साहब, आपके पति देव जी अभी कैलगरी से निकले हैं, वो बहुत 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे आपके पास। तो बस आप उनका खाना पीना तैयार रखिए, तो हम सब लोग आपकी खुशी में ही खुश होंगे। और आप हमारी आज की जो खुशी है, असम का बहुत प्यारा जो न्यू ईयर मनाया जाता है बिहू, तो आप लोग इस खुशी में शामिल होइए और आपकी खुशी और हम सब की खुशी मिलजुल कर बहुत बड़ी खुशी और पूरे समाज को, पूरे संसार को खुशियां बांटे। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसका प्रचार प्रसार में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया लिपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बड़े प्यार के साथ आज बिहू के बारे में, असम का जो ये दिन है, जो न्यू ईयर है, इसके बारे में हमें पता चलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और क्योंकि कोई भी स्टेट है, बेशक हो बंगाल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, एमपी हो, वहाँ का सारा जो अलग अलग वहाँ के कल्चर का मेल है या वहाँ की जो खुशबू है, अलग अलग खाने अलग अलग हैं, बहुत जो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे साथ श्री अरूप गोस्वामी जी जुड़े हैं, उनका परिवार जुड़ा है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू करते हुए हम लोग उन सभी संगीत प्रेमियों का भी थैंक्स करना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम के साथ बस जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस हम उनकी वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी शख्सियतें जुड़ेंगी तो हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे भी आने वाले टाइम में। बस आप ऐसे ही अपना प्यार इस प्रोग्राम को देते रहें ताकि हमारी सुनीता जी पिछले तकरीबन 5-6 दिन से लगातार नॉन स्टॉप 24/7 सर्विस जो है वॉलंटियर वर्क की, उसमें लगे हुए हैं सारे सेवा करने के लिए। और हमारा सबका फर्ज बनता है जो भी वॉलंटियर दुनिया के किसी भी कोने में सेवा करता हो उसको थोड़ा एनकरेज करना ताकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा उस सेवा में लग सकें और उनको देख के दूसरे सेवा में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के सर्वकाल टीवी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप ऐसे ही जुड़े रहें और बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दें ताकि हम सब मिलजुल कर इस प्रोग्राम को अच्छा बना सकें। और थैंक यू वेरी मच लिपिका जी, आपने बेस्ट ऑफ, सुनीता जी आपको बेस्ट ऑफ विशेष दी हैं, बेस्ट विशेष दी हैं और आप ऐसे ही अपनी सेवा में लगे रहे। और दीपिका जी जैसे बहुत प्यारे प्यारे जो सज्जन इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करते हैं और भी अच्छा बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जी सीधे सुनीता जी के पास। सुनीता जी, वेलकम टू सर्वकाल टीवी शो। आइए और आगे की जो कार्रवाई है आप संभालिए, तो हम लोग फिर ऐसे ही बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे और जैसे ही और संगत जुड़ती है उन सबको भी वेलकम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी सुनीता जी के पास। जी सुनीता जी, वेलकम टू सर्वकाल जी। नमस्ते एवरीवन, दिस इज सुनीता Alokam from Sarvakal TV. We welcome you to the Spirit of Festivals, Rongali Bihu. So far, with all your tremendous support, we celebrated Kannada Ugadi, Kerala Vishu, Tamil Nadu Puthand, Telugu Ugadi,
Marathi Gudi Padwa, and today we are moving up to northeast, which is Assamese Bihu. Rongali Bihu is Assamese New Year, so wish you all a very, very happy Rongali Bihu. This program is sponsored by Aman Gill, mortgage manager at TD, and Rick Chahal, a realtor at Dream House Reality. Thank you, Rick and Aman. We appreciate your support. And also, we thank all our viewers who have been supporting us all through this series. Today, our guests for Rongali Bihu are Mr. Arup Goswami and Mrs. Manasi Goswami. They'll be joining us shortly to share their experiences of celebrating Bihu in India as well as in Calgary. Mr. Arup Goswami is originally from Assam. He is currently a CEO for Argos Engineering in Calgary. He's actively involved with various cultural and social organizations. He served as president for various organizations like Alberta Assamese Association, not just in Calgary, but also in North America. He also was the past president of Rotary Club of Calgary East. He's a music enthusiast and he plays guitar. Now coming to Manasi Goswami, she's a singer working as a financial controller in Calgary, also past president of Alberta Assamese Association. She actually participates in various cultural and social events. So please join me to welcome our guests for today. Namaste, Arupji and Manasi. Wish you both a very, very happy Rongali Bihu. So, first of all, I would like to thank Sarvakal Music Society and Sarvakal TV channel to promote our Bihu festival and giving a good overview to all of your viewers. So thank you, everybody. And I want to welcome, I want to say happy Rongali Bihu to all of you. Thank you. So Thank you very much. Oh, nice. So I heard that Rongali Bihu is celebrated for 7 days. So what do you do every day? So how do you celebrate it for 7 days? Yeah, so it is actually, we have 3 Bihus. First of all, we have 3 Bihus. That is, one is the Mahakama, or the Mahakama is the Rongali Bihu that starts in January. So where you just eat food and everything. And next one is the Rongali Bihu, which is celebrated in April 14th. And that is the mostly the one for the new year, starting of the new year, and all the festival things will start on that. And there is another Bihu which is called Kongali or Katibihu, which is just in October it go to the paddy field and there is nothing, means you are praying to the paddy field that next year it will grow more crops and everything. So that's what it is, the 3 Bihus. So out of these Bihus, Rongali Bihu is the most important and most widely celebrated festival in Assam. So also in this Rongali Bihu, there are 3 phases. So 3 phases means the first phase is called the Rakibihu. And Rakibihu actually start from the month of the Chaitra, and we call it is the Sotma. So in the Chaitra month, they start, actually first what they do, they go to the under a tree or an open field. Mostly the ladies, they get together and they start preparing for the, upcoming Rongali Bihu. They will start, all those preparations. And what they do, man and the young man, they start performing husori from that day. And they go house to house doing the husori, getting the blessings, and also giving some blessings from their side and collect some money
as a token of, it's called as a token of gift they give it. They call it as a manoni in our Assamese, means they just give a little bit of offering. So that starts the month of Chaitra, and it goes up to the last but one day of the Chaitra. So that is called the Rakibihu. So it starts from that. Or it's also called as a Sotor Bihu, means the month of Chaitra and Chaitra Bihu. So, and then it goes to the Rongali Bihu. The first day of Rongali Bihu, the end of the Chaitra month, the last day of the Chaitra month, this is called the Sotma, and that is called the Goru Bihu. So Goru Bihu is the starting of the actual Rongali Bihu, and Goru Bihu, all the cows, and you can see in the picture what you just put it out, they take out all their cattle and bulls and cows to the river. They wash them, and then they just put turmeric and dal, that mah and halodi we say, and then wash them properly, and then they beat them with some leaves, and those are called digloti and makioti pat, and they beat them to become a bigger grow for the next year. And also they feed them the lau, which is called lau, and bagana, which is the loki. In Hindi we call loki, and the bangan. So they make a skewer type, like barbecue type, we can see that, and they feed them those to the cows, and they always sing a song in that day, and that is a very common song. It will say lau kha bengena kha bosore bosore barija mar horu baper horu toy hobi bor goru. The meaning is just eat some lau and eat some brinjal, or that bangan, and grow every year. Your mom is small, your dad is small, but you will be a big cow. So that is the starting. Oh wow. Okay. So the cow are fed barbecue? Yes, it is a barbecue, not cooked, but it's a raw skewer. So. Oh, okay. Nice concept. Yeah. So next day is the first day of Basak. That's the Bohag we call. The Basak is called Bohag, and that day is the Manu Bihu, means it is for the Manu, or the human. So it starts with the praying to the elderly persons, and also somewhere it says that even the ancestors, you give a little bit of offering to the ancestors that day, and people they always take a bath with that mah and halodi. That means that turmeric and the dal. They just put in their body, and they take bath and everything. They wear new clothes and go to the elders, and they always give the gamusa. So main thing is gamusa is our main what you call it, a towel, but it is also taken as an honor. As an honor, you can offer it to the elders, or even they give as a gift to the youngers. So that's the starting of the Manu Bihu. Also that day in the evening, in the daytime they always have some lunch and everything with our special Bihu items, and then in the evening they perform those musical our Bihu dance and those things they do. The next day is the Kutum Bihu. It's called Kutum. Kutum means, I think in Hindi also it is called Kutum. The Kutum is actually mainly the relatives. So you go to the second day, you go to your relatives, go to your family, all the close relatives and friends for your, first of all, you go for your lunch, and you will have dahi, and then sira to people? Sira. Yeah, the chira, dahi, and then all the laddus and those things are made, and then you have that thing in the lunch. And in the evening, you again go for that, Bihu dance and performances. So that is the Kutum Bihu. The next day, which is the third day of Bihu,
and it is called the Mela Bihu. So mainly that's day. Originally, that day is the starting of the main Bihu, which is done as like a Mela. It will be always in the field or in the front of a temple or in a Gosai Ghor, we call, like, it will be in the temple. They will be, first of all, they will do little bit of, ritual things, and they will always give honor to the, elderly persons. Even the flag hosting is done, that, the flag will be hosted. And in the evening, from the evening, those, all the Bihu dances and those things will start as a cultural program. So that is the main starting of the Mela Bihu. Oh. And the next one is the Sera Bihu. It's called Sera Bihu, also called Bohagi Bidai. That is the 4th day. So what it was originally, on the 4th day, it will be the end of the Bihu, and then they will be saying that, okay, goodbye to the Bihu festival. So that day they will perform all these, all the cultural programs and everything, and they will offer some those pitha and laddus to the, everybody, and they will be saying that, okay, this is our closing ceremony, you can say. Closing ceremony. Oh, okay. End of the celebration, and welcome for the next year, they will say. So that was the originally. But nowadays, what is happening, these 4 days is becoming like more than 7 days, or even sometimes it goes to 14 days. So it's like, extended more now. Yes. Yeah. So basic idea of the Bihu is called, that's why it is called even the Sat Bihu, because it is 7 phases, not in 7 days, but 7 phases. So it is called Sat Bihu. So basically that is the, Rongali Bihu celebration thing. So. Nice. Very interesting. And festivals are all about meeting friends, family, and food and music, enjoying food and music. So what special kind of food do you cook for Bihu? So Bihu food, actually, I think you have a slide and prepared by Papuri Gorthakur. That one you can just maybe put it up. So Bihu, so Bihu items are mostly like we call, this is the musical one. This is the food where you will see all the snacks, like the laddu, steel ka laddu, nariyal ka laddu, then all the, rice, some pitha, we call pitha, which are the, like, what shall I say, like a rice, it's a rice, they make it with some sweets also there, gur, and they will mix it, and that way, there are several items are made for snack. And also the chira and dohi is there always. And also on the lunch or in the, there will be the main food, like the rice, dal, and there will be, so there will be some different, items will be there. And in the Bihu, there will be 7 types of sags they make it, and that it's also an important part of that. So those things are all done, like, and that will be served as a food. And so those are the main items for Bihu. Nice. Do you traditionally serve food on a brass plate? Yeah, that's what it is actually. You will see another, also I have some plates and those things here. So the brass plate, and we have also, like, these are the main brass plates, and this will be in different sizes, and there will be some also bowl, and those things will be there, and that will be served in that. So this is the main thal. The dish is called kahi. We call it kahi. It's served there. So mainly it is served there, and the bowls are also all. This is the brass material. So. Nice. And also for, this is a bota, the small one, and which is like, you put your betel nut and betel leaves and supari, and then pan, offer it at the end of this one, after having your, put your, like, this thing. This is also used for even honoring people. Sometimes what they do, the bigger one, they use it and put a gamusa. This gamusa, they will put it there, and then they will, this is the gamusa here, and they will put it there, and they will just,
pray like this for welcome. Okay. So a lot of things these are used actually for honoring or welcoming. These are used. Wow, very Also, nice tradition. one more thing is that sorai, we call it. It's a horai. We call it horai. So which is a covered one, and this also actually served for the some of the food means mostly for the your pujas and everything, all the prasads you offer on these. But these are also symbol of, same thing, like it will be symbol of honor, symbol of respect. Everything goes with this. So this is also a horai is called. So it is also very important for Assamese people. You will see a lot of cultural things. These are always there in the gate or in marriage also. These are used. So these are used mostly in all the places. Nice. Is that the traditional attire, Mansi, that you're wearing? The sari that you're wearing is that some traditional? Yes, yeah. This is our traditional attire. It's called mekhela sador. So this is actually two-piece. The bottom part called mekhela, and it's draped from the waist downwards, and the top part it's called chador. It's that top part. So yeah. So and then this silk is muga silk. I guess you know already. Muga silk is endemic to Assam. You can only found in Assam, and that's like the silkworm. Those silkworm actually, the larva of the moths fed on som and sulu leaves. That's how they produce like a natural golden tint thread. So it's a very glossy texture. So yeah, so those are mekhela, and I'm wearing exactly the same thing. And we have one more silk, very popular in Assam, called pat, also called known as Mulberry Silk. Actually, that's originally comes in two colors, like white or off-white, and they dye later with different colors. And I'm also wearing our traditional jewelry. This is called bana. I'm also wearing matching bana earring. And this is like a choker we call golpata, and it's like a floral design. And with sorry, what is it made up of? Is it made up of beads and? Yeah, this is actually garnets. Those are like a tall garnet, and it's gold. And this is called gamkharu. In Rongali Bihu, the dancers actually wear this kind of muga mekhela chador, the motif like a red color motif, and then gamkharu, and then we have one flower like an orchid called kopoful. I don't have it here, so I didn't wear it, but usually they wear around their the bun, and when they dance, they wear actually. The ladies wear this kind of clothes, and men wear what Arup's wearing, like a muga shirt and dhoti, and the gamusa. One gamusa they put around their waist, and then one around their head, like the tie on the side. So so that's what it is. Yeah. So nice. Thank you. If I can discuss about like our silk, it'll be like. Hours. Like this. So yeah, we don't have so much time. So yeah, that's okay. Thank you for sharing at least some details. So Assamese music is also called bihu. Yes. Traditional or classical music is bihu, and you use different kinds of instruments, right? Yes. Yeah. So, what are those different kinds of instruments that are used in bihu music? Yeah, you have one slide actually. I think you have one that one. So the music is like the dhol. Dhol is the dholak. The dhol is even mostly used for the beat. Then there is a kappa, which is like the pipe, or what you call this is the horn. The horn. This is actually the horn from the buffalo horn. It's a buffalo horn. Buffalo horn. The backside is with the bamboo, and it's like it's a
horn, and that tal is, of course, everybody knows that with the brass, brass material. And we have another one is called, very important one is toka. That is on the side, which is made with the bamboo, and it's like a clapstick, and it's just with it like this. So. So those are the main items, and there is another one is called Gagona, which is also made out of bamboo, and mostly all the dancers, ladies dancers, they put it on their the bun or in the hair, they put it, and then they take out, and with the mouth they just play. So it is also used in the Bihu songs. So you will, when you hear, then all these music instruments were played together with the Bihu song. Oh, okay, nice. Thank you so much, Papuri, to put all the pictures together for us. For sure, it makes it more so much more impact when we see the picture, and then when we talk about it, it makes more sense, and we can relate to it. Yeah, thank you, Papari. Also, what's that? I think it's made up of bamboo or something. The thing that is behind the hand. That's called japi. Actually, we have a smaller version of it. This is like, it's actually hat, and you wear it like that. So what is that called? So what is that called? Japi. Japi. Okay. Yeah. So basically, this is a hat, and the farmers actually used in the paddy field to protect themselves from the sun. That's not very colorful. This is colorful version of it, and we also use it for our Bihu dance. So we like go around it. Yeah. So yeah. So everybody will see that in we have one dance with our japi. Yeah, there's performances coming up. Yeah, you can see later. Yeah. Also, now coming to the temples, Assam has some very ancient temples. What's the most famous temple? Actually, first of all, I'll tell that there are more than 1,000 temples in Assam, and out of that, Kamakya temple, it's called Mahakama. Kabaka temple is the most famous temple. Yeah, this is the one. This is in Guwahati, in the hill of Nilachal. And this was, it is learned that it was done in 10th century, actually. 10th century it was built. Wow. But in 15th century it was rebuilt again. It has a very good historical, actually not good, important historical background of this temple. So in India, there are 51 Shakti Peeth. I think most of the people will know that there are 51 Shakti. Shakti is the energy, and Shakti Peeth. So this Shakti Peeth, this is also one of the Shakti Peeth of that 51. And this is quite very important. And historically, how it was, the Shiva got married to Parvati, and because Shiva was having all the time that bhang and this ganja and those things, that's why Sati's father Daksha Raj, he did not like Sati because she got married to Shiva, and they had a big yagga is there, and then Havan, actually. They did a very big Havan, once a very renowned Havan, and they did not invite Shiva and Parvati. So Parvati got mad that my father did not call us, and then she jumped into that Havan, and she died there. She burned herself. Because she got insulted, that's why she just burned herself. Then when Shiva came to know that Parvati got burned, and then he took her on his on his back, and then he started that dance is called that Natara's dance, that no, exact word was but it was called but anyway, that dance Tandav Nitya, and that Tandav Nitya he started, and then everybody went to Vishnu and said that he is becoming mad, and he is going around all over, and he is not even letting Sati to be cremated or these things. Then what Vishnu did, Vishnu sent his Sudarshan Sakra, and then start cutting the parts of the Sati's parts, which is the dead body.
And that way it fell. All the 51 parts fell in 51 places, and those are wherever it fell, it become a pilgrimage, very important one. It's a Shakti. Yeah, and in Kamaikha, the Yoni Mudra fell, and that's why it is called, it's a very, we call Jagrata. Yes, very, very, and the Tantric. So all the Tantras and Tantra mantras start from there, and the Tantrics started actually all there from the Kamaikha temple. So Kamaikha temple has a history thing actually. So there are a lot of other things also. Yeah. Yeah, so much history. Yeah, definitely. Yeah. And there is one more is called, I mean, there are so many, like, but out of that, Majuli. So you know that in Assam, the river Brahmaputra, the mighty river Brahmaputra runs through the middle of Assam. And there is one island which is the largest river island of the world. This is the largest river island of the world, and there are lots of temples and satras. Satras are what? There are some Hindu temples, and then satras are actually a little bit of Vaishnava. It's called Vaishnavi. Vaishnavi is like praying Krishna. So mainly they pray Krishna. Krishna is the main lord there, and so main Vaishnava dharma starts in Majuli. So it started from there. And one of our prophet, which is called Shankar Dev, who was the cultural reformer of Assam and also religious, like a Vaishnavi dharma was, main started by him. He actually did a lot of cultural evolvements or evolution to the Assamese culture. So that starts from there. The Majuli is still, doing. Having all those, and then they are promoting all over. And there are some satras in other areas too, like in other part of the Assam. So basically, nice. Those are the ones. Yeah. Oh, thank you. Thank you. When we talk about Assam, how can we not talk about tea? That's Assam is so popular and famous for its tea. Is there any distinct feature that is about the Assamese tea compared to the tea available from other parts of India? Yeah. First of all, our tea is like, it is the black tea, because lots of times people think it is a herbal tea or no, it is directly the black tea. So in India, actually, the tea is in Darjeeling, mostly Darjeeling. In Kerala also you will find some tea, and in Assam. Yeah. So, but because of the weather condition, the Darjeeling tea and Assam tea has a different flavors. And what they do, Assam tea, there are some very precise Assam tea and Darjeeling tea. They mix both of them, and it becomes very, very, different taste, and it is very expensive too. So this is the black tea. So it is very, tasty. It becomes very tasty. Okay, and actually, it was, started by the English people when they first came to India, and then they moved to, this is the garden. When they moved to Assam, they found out the tea. So the main founder of tea was the C.A. Bruce, was the one who got tea in Assam. So tea has a lot of medicinal value too, because it has what is called that one? The caffeine. It has caffeine. Though it is called caffeine is bad, but medicinal wise, caffeine is there. So this is the tea garden, and all the tea workers are, wearing jappi too. Yeah, they are wearing that. Wearing the jappi. And when you are talking about tea, also there is another thing which is like one horn rhino. I have a small wooden sample of that. In world, all the rhinos have two horns, but only the species in Assam has one horn rhino. That is also very, very important. That's why people also in Assam, whenever they say the tea and they say this rhino, they call gore. We call gore. Gore and tea is quite important for Assam. Wow. Yep.
Thank you so much for all this information on various prominent features related to Assam. We greatly appreciate both of your input and also your friends who have shared all the information through pictures and also through performances. I'm sure everyone is waiting for the performances. So we probably have to stop here for today. And it's really interesting to get to know so much more. We just knew very few things about Assam. I just knew that it's a Bihu. Assamese they celebrate Bihu, and Bihu is their dance, and it's popular for tea. But there's so much more, and greatly appreciate your time and efforts for sharing your experiences and knowledge. Thank On you. to Harjit. हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरूप गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे संगीत प्रेमी, संगत अलग अलग कंट्रियों से जुड़ी हुई, उन सबका थैंक्स करते हुए हम लोग हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका अरोड़ा जी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, तो आपको भी उनकी तरफ से बेस्ट विशेष लिखा गया है। हमारे जितने भी हर्ष खुराना जी, अरुणा जी, मुनावर जॉन भाई सब पाकिस्तान से हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सर्वकाल के, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनावर भाई। तो आप ऐसे बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। विद इन 5 मिनट हम लोग सर्वकाल टीवी पे आपको परफॉर्मेंस के लिए हम लोग अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना 5 मिनट के बाद सारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े इस प्रोग्राम के साथ। आज असम का हम लोग सारे सभी जो चाय के बारे में बातचीत करते हैं, चाय के बारे में सुनते हैं, तो आज आप देखिए कि आज असम के ही कल्चर के बारे में, वहाँ की जो रीति रिवाज हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी की तरफ से। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार लिखा गया है। बीना जी हमारे बहुत ही प्यारे सर्वकाल के, हर रोज का इनका बहुत आशीर्वाद रहता है इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि खुद भी बहुत प्यारी सेवा करती है बीना जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस 5 मिनट का समय दीजिए हमें, 5 मिनट बाद हम लोग फिर मिलते हैं सर्वकाल टीवी शो में, जिसमें आप लोग बहुत ही प्यारा जो असम का म्यूजिक है उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, संगीत प्रेमी हैं जो सारे जानते हैं बेगम परवीन सुल्ताना, जो कि बेसिकली असम से हैं। आई थिंक अरूप गोस्वामी जी उनको बारे में जानते होंगे। तो दुनिया का एक वो स्टार जिसके बारे में बेगम परवीन सुल्ताना जी के बारे में अक्सर हमारे इस प्रोग्राम में बातचीत रहती है कि वोकल की दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो बेगम परवीन सुल्ताना जी हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने जहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वहीं पे उन्होंने असम का भी नाम रोशन किया है। जब भी बात चलती है, जब भी बात होती है, तो असम के बारे में उनके इंटरव्यू में या उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आप उनका एक बहुत प्यारा इंटरव्यू है पंडित अरविंद पाठक जी की बैठक में, जो कि मुंबई से यूट्यूब अरविंद पाठक यूट्यूब चैनल आप देखेंगे तो वहाँ पे बेगम परवीन सुल्ताना जी का एक बहुत प्यारा इंटरव्यू है, 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू है। और आप जो संगीत प्रेमी हैं उनको बहुत नॉलेज मिलेगी उस इंटरव्यू से। बहुत ही बड़े स्टार हैं हमारे हिंदुस्तान के, और हमारा सपना है कि अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग उनको कैलगरी जरूर लेके आएंगे। तो ट्राई करेंगे कि वो कैलगरी आए। हमारी कोशिश थी लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर इस साल कोरोना बाबा जी आ गए, परवीन सुल्ताना जी तो नहीं आई, तो कोरोना बाबा जी आ गए। तो उनकी कृपा ऐसी हुई कि सारे जो आर्टिस्ट आने वाले थे वो स्टॉप हो गए। तो कोशिश जारी है, हम लोग अपनी कोशिश में लगे रहें। और जो भी हमारा हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बारे में हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम जहाँ भी जाएं हमारे इस समाज के बारे में लोगों को पता चले, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी वहाँ के म्यूजिक, क्योंकि हर स्टेट के आप लोगों को पता होगा कि पंजाब का अलग म्यूजिक है, हरियाणा के आप लोग जाएंगे तो आमतौर पर लोग बात करते हैं कि हरियाणा का बड़ी जो लैंग्वेज भी बड़ी कड़वी है और बड़ी मुश्किल है। लेकिन वहाँ का जो म्यूजिक है, रागनी जिसको बोलते हैं, रागनी अक्सर ढोलक के साथ गाई जाती है।
तो मटके के साथ और ढोलक बजाई जाती है। और आप लोग हैरान होंगे कि जैसे महाराष्ट्र में ढोलक लावनी में बहुत अच्छी ढोलक प्ले होती है, ऐसे ही हरियाणा में रागनी के साथ जो ढोलक प्ले होती है वो भी अपने आप में एक बहुत अलग अंदाज है। बहुत ही प्यारा कल्चर है हमारे असम का। और हमारे हर्ष खुराना मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार के साथ असम का जो कल्चर है उसके बारे में बहुत प्यारा एक कमेंट दिया है। हम हर्ष जी हमारे बहुत ही प्यारे इस प्रोग्राम के लिसनर हैं, आशीर्वाद देते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि कैलगरी इस वक्त इस प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में और अलग अलग कंट्रियों में देखा जाता है। और यूके से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, यूएसए से जुड़ते हैं। आज सॉरी तो एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत ही इस प्रोग्राम की जो बड़ी प्यारी लाइव प्रोग्राम को शुरू करवाने वाली एक बड़ी प्यारी हस्ती हैं हमारे अंकिता साहा जी, जो कि यूएसए में रहते हैं, न्यू जर्सी के पास। तो उनकी ये बड़ी चाहत थी कि सर्वकाल ये प्रोग्राम शुरू करे। और आज एक बड़ी दुख की खबर है कि उनकी कजन सिस्टर की कोरोना से डेथ हुई है। तो हम लोग सारे सर्वकाल के इस पूरे टीवी शो की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हम लोग उनके साथ भगवान के पास, वाहिगुरु के पास अरदास विनती करते हैं कि उनकी जो सिस्टर इस संसार से छोड़ के चले गए, उनको भगवान अपने चरणों में निवास बख्शिश करें। और सबको रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब भी बाहर जाएं तो अपना मास्क है जो उसको जरूर अपने पास रखें। गलती हम ना करें, अगर दूसरा करता है तो उसकी मर्जी, लेकिन आप अगर दूसरा करता है तो आपको भी बचना है। हम लोग अगर ये कहेंगे कि ये सरकार करेगी, वो सरकार करेगी, वो जो भी सरकार करेगी, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि जब भी हम बाहर जाएं अपना मास्क जरूर पहन के जाओ। खास तौर पे जब आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। हाथ की सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे बैठे संगीत की बातें करते हैं, कल्चर की बातें करते हैं, तो ये चीजें भी हमारे ही कल्चर का हिस्सा है। हमें रेस्टोरेंट में जाना है तो हाथ की सफाई जरूर करनी, हैंड वॉश जरूर कीजिए, मास्क अपना जरूर साथ में रखें, ताकि हम लोग खुद भी सेफ्टी में रहें और दूसरों को सेफ रखें। ये हमारा सबका फर्ज बनता है। हम सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जो हमारी इंडिया की टीम है उनकी तरफ से, हमारी पाकिस्तान की टीम है, यूएसए में, जहां जहां पे भी हमारे सर्वकाल के कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हमारा जो कैलगरी से ये शुरुआत हुई थी 2009 में, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको हमने फैलाना है। क्योंकि दो चीजों का जो ज्यादा से ज्यादा काम इस वक्त चल रहा है वो कोरोना बाबा जी का चल रहा है। तो उससे बचने के लिए संगीत के साथ जुड़िए, संगीत को सुनिए, संगीत के बारे में जानिए, संगीत के बारे में अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए। और कल को टुमारो मॉर्निंग 8:30 बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाली है, कथक डांस का प्रोग्राम रहेगा। और 8:30 से आपके सामने बहुत ही प्यारे होस्ट मैडम विदुषी रजनी राव जी इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी दिल्ली से। और जो हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ेंगी वो बहुत ही बाकमाल आर्टिस्ट है। और हर रोज ये नहीं है कि एक दिन, एवरी डे मॉर्निंग 8:30 को ये जो प्रोग्राम होता है उसमें आप लोग एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट को देखते हैं, सुनते हैं। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि जो कल का प्रोग्राम होने जा रहा है उसके साथ भी हम लोग जुड़े और बड़े प्यार के साथ उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। कैलगरी में बैठे बिठाए, बिना कुछ खर्च किए हुए, बिना, क्योंकि आज के जमाने में कोई चीज अगर हमें मिलती है वो भी कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, तो मेरे ख्याल में उस चीज को ले लेना चाहिए। तो हम सब खुशकिस्मत हैं कि बिना ट्रैवल किए घर में बैठे बिठाए आपको कल को बहुत प्यारा कथक डांस का प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। और इस प्रोग्राम के साथ जो आर्टिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनका नाम समीक्षा जोशी, और जो इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी मैडम विदुषी रजनी राव। दोनों ही, एक तो आप नाम सुन रहे हैं होस्ट का, होस्ट भी एक बहुत बड़ी कथक डांसर हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उनका अपनी जिंदगी का बहुत लंबा समय कथक डांस के साथ, और जो इस प्रोग्राम में आ रही हैं वो भी एक बाकमाल आर्टिस्ट है। और लगातार पिछले 1 वीक से हम लोग तबला फेस्टिवल, वो भी गर्ल तबला फेस्टिवल के साथ जुड़े,
3 दिन का ये जो कथक डांस का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, उसके बाद ये जो कल को हमारा वैसाखी का 7 डे का फेस्टिवल फिनिश होने के बाद एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल आगे स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब लोग ऐसे बने रहें। और 8:30 मॉर्निंग इंडिया का टाइम जो है 8 PM है और कैलगरी का 8:30 AM है। और दूसरी जो कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे इस प्रोग्राम को देखते हैं लोग। हर कंट्री में इस प्रोग्राम को प्यार मिलता है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं, सिर्फ अपना आर्ट और अपने जो देश की अलग अलग बोलियां हैं, लैंग्वेज हैं, वहाँ का क्या जो जैसे असम के बारे में अब आज हमें पता चला, वहाँ के चाय के बागों का बारे में पता चला, वहाँ के मंदिरों के बारे में पता चला। तो हमारा सबका मकसद है कि इस चीज को लोगों तक लेके जाएं। हमें बड़ी खुशी होती है, हम जब बैंफ में जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी आबो हवा, माउंटेन एरिया अच्छा लगता है। तो ये चीजें सारे हमारे देश में भी हैं। बैंफ का भी लोगों को बताएं, क्योंकि हमारी कर्म भूमि है, अभी हमारी जन्म भूमि है हमारे बच्चों की। तो ये सारी चीजें जो हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग थैंक्स करना चाहेंगे गोस्वामी जी का। दोनों ही पति पत्नी परिवार इकट्ठा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि वैसे तो आज के जमाने में इकट्ठा होने को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो भगवान की कृपा है कि पूरा परिवार इस प्रोग्राम का हिस्सा बना है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे खुश रहिए, प्रोग्राम होते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोरोना आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हंसना मत छोड़िए, खुश रहा कीजिए। संगीत को ज्यादा से ज्यादा संगीत के साथ जुड़िए। जितना संगीत के साथ जुड़ेंगे उतना ही जिंदगी का आनंद लेंगे। और ना हमारे सुनीता जी भी बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम को लगातार होस्ट कर रही है, बड़े खुशी के साथ। और आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि इतने पैशन के साथ इस काम में लगी हुई है कि अभी मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अगर मेरे जैसा इधर उधर हो भी गया तो सुनीता जी इस प्रोग्राम की सेवा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारे प्यारे सज्जन इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं अलग अलग कंट्रियों से, उन सबका थैंक्स करते हुए चलते हैं फिर सुनीता जी के पास। जाते जाते सुनीता जी क्या कहना चाहेंगी और क्या मैसेज है आज का हमारे सभी श्रोताओं के बारे में? जी सुनीता जी। Thank you. First of all, thank you all for being with us, and also thank you Arup ji and Manasi for bringing all that useful information and sharing with us. We would also like to thank on behalf of Sarbakal team Manasa Brody. The performances that you're going to watch today, she helped editing the file so much. In spite of being very busy, she spent so much time in getting those in order, and that is what you're going to enjoy very soon. So thank you so much, Manasa brother. I'm not sure if you are watching. You are probably busy preparing for your exams, but thank you so much. And like Harjit Singh ji said, we'll have to end this session here, and we'll have to initiate another live session at the same on the same page. So stay tuned. In 5 minutes, we'll get to the performances. Once again, thank you all. Thanks to our sponsors, Aman Gill and Rick Chahal, and thank you all and namaste. See you soon.